we are going to have a long session, right? So उसके लिए मेंटली और फिजिकली तैयार रहना चाहिए। लेकिन इसमें ये है कि जहां भी आप महसूस करें कि यू नीड अ ब्रेक, या मुझे महसूस हो कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, तो वी विल टेक अ ब्रेक अकॉर्डिंगली। सेकंड ये है कि let's make it more informal and interactive session। तो जहां भी आपको महसूस हो कि किसी चीज की क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो you can stop me and we will talk about it। तो आज का टास्क हमें दिया गया है, दैट्स अ वेरी बिग टास्क, कि हमने ये लिस्ट मुझे दी गई है कि जो हमने कवर करनी है या जिसको डिस्कस करना है, जो असेसमेंट मेथड्स हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं या शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं। हम जो लोग यहाँ जो टर्म यूज करते हैं वो SCQ को स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं, और उसमें बाकी सारे ये SAQ, MEQ और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस और पेशेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, सारे चूंकि स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चंस हैं तो ये उसमें आ जाते हैं। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस एटलीस्ट हम लोग अब यूज नहीं करते। आई एम नॉट श्योर कि आप पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं या नहीं। फिर वाइवा है, फिर टॉप्स है, मिनी CX है, OSPI है, टोक्स और एक्सटेंडेड टोक्स और सिचुएशनल जजमेंट। तो इंशाल्लाह हम इन सब पे बात करेंगे। कुछ टॉपिक ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे, कुछ थोड़े कम डिटेल में। राइट, so based on this list of assessment methods, तो हमारे जो लर्निंग आउटकम है इस सेशन के would be कि discuss the differences between different types of multiple choice questions. So we will have a list of different types of MCQs, and then we will try to find out what's the difference between them. और फिर construct the questions either based on Bloom's taxonomy or Miller's pyramid concept. Then the salient features of structured essay questions, or then developing valid and reliable structured essay questions, or then is the workplace-based setting assessment or clinical assessment. So broadly, these are the 5 learning outcomes which we will, inshallah, achieve in this session. Now, coming to just an overview, the objectives of assessment and the appropriate tools for assessment. We have to choose the proper tool based on whatever is our objective of assessment. If we just want to assess the knowledge, which would be the low level of pyramid, Miller's pyramid, ये जो साइड पे मैंने कलर्ड फॉन्ट में ये लिखा है, that relates to Miller's pyramid. So knowledge, the knows of the lowest level, उसको assess करने के लिए we can use multiple choice questions or structured essay questions. The next level is comprehension. उसके लिए structured essay questions, also can use multiple choice questions, but structured essay question would be a better choice. When it comes to interpretation, which is the third level, उसमें फिर structured essay questions हैं, OSCE और इसके बहुत से variants हैं, and some degree or some types of multiple choice questions. Similarly, problem solving जो एक knows how के और shows के level पर है,
इसमें भी स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इट्स वेरिएंस। ये हम देखेंगे कि जो ऑस्की है उसके बहुत से वेरिएंट्स जो हैं यूज हो रहे हैं, और इस लिस्ट में भी जिस तरह डॉप्स है या टोक्स है ये, और ऑस्पी है ये, ऑस्की के डिफरेंट वेरिएंट्स। क्लिनिकल स्किल्स ऑफ कोर्स ऑस्की है, लॉन्ग शॉर्ट केस है। आज हम मिनी सीएक्स की बात करेंगे इस सिलसिले में। और प्रैक्टिकल स्किल्स में ऑस्की, ऑस्पी और टोक्स और डॉप्स है। जबकि अगर हम एटीट्यूड असेस करना चाहते हैं तो वो बेसिकली वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट होगी, जिसको हम 360 डिग्री असेसमेंट कहते हैं, या पोर्टफोलियोज हैं। इसमें जितने भी लोग स्टूडेंट से रिलेट करते हैं वन वे और द अदर, they give their feedback. So this is just an uh, overall or overview, okay, how we relate the assessment tools with the objective of assessment. Now, coming to multiple choice questions, the types, there are number of types. Type X, जिसको हम true false भी कहते हैं, select each option independently. Type K, selection and combination of options, A or C or B or D, इस तरह से. Type B is matching format, so एक साइड को दूसरी साइड से मैच करना है. टाइप सी मैचिंग, लेकिन उसके साथ ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ऑप्शन है. और टाइप ई में आप एक तरफ कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, यूजली ये उस पे मैकेनिज्म्स पे, और दूसरी तरफ उसकी रीजंस होती हैं और उनको मैच करना होता है. तो ये एक कंफ्यूजिंग लिस्ट है. आई डोंट थिंक यू नीड टू बी वरीड अबाउट इट, क्योंकि इसमें हम सब तो यूज नहीं करते, और कुछ तो ऑलमोस्ट अबंडेंट हो गए. ये थे मल्टीपल, जिसमें आप ऑप्शंस चूज करते हैं. दूसरा ग्रुप है जिसमें सिंगल आंसर फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं, कि उसमें सिर्फ आपको एक ऑप्शन चूज करना होती है. और इसमें टाइप जी है जिसमें सिंगल करेक्ट आंसर है, कि अगर आपने 4 या 5 ऑप्शंस दी हैं उसमें सिर्फ एक जो है करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है. तो इस वन आउट ऑफ 5. या टाइप ए है जिसमें जो 4 या 5 ऑप्शंस हैं लेकिन सब टू सम लेवल करेक्ट हैं, और उसमें से आपने बेस्ट आंसर चूज करना होता है. ये नेसेसरी नहीं है कि वो बेस्ट आंसर करेक्ट भी हो, पूरी तरह करेक्ट भी हो, लेकिन अमंग दोज ऑप्शंस जो 4 या 5 ऑप्शंस दी जाती हैं उसमें वो बेस्ट ऑप्शन होती है. और टाइप आर है जो एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस हैं. अगर आप देखें तो पहले हमने पिछली स्लाइड पे मैचिंग क्वेश्चंस की बात की, जिसका टाइप बी है. उसमें और इसमें एक्सटेंडेड मैचिंग में फर्क ये है कि टाइप बी में जो दोनों साइड पे जिनको आप आइटम्स को मैच कर रहे होते हैं वो इक्वल होता है. उसमें होता ये है कि फर्ज करें 5 सेट्स हैं, अगर आपको 4 आते हैं तो 5वां ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है, चाहे आपको उसका पता हो या ना पता हो. जबकि एक्सटेंडेड मैचिंग में ये नंबर इक्वल नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऑटोमेटिक मैचिंग जो है किसी एक पॉइंट पे उसके चांसेस नहीं रहते. राइट. जो इतनी सारी टाइप्स जो है क्वेश्चंस की, लेकिन जो कॉमनली यूज हो रहे हैं उसमें एक बेस्ट आंसर क्वेश्चन है और एक एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन है. तो और टू सम एक्सटेंट जो है वो ट्रू फॉल्स टाइप, जो अब हमारे यहाँ यूज नहीं होते. आई एम नॉट श्योर आपकी सिचुएशन में.
So basically, we would be talking in detail about the best answer questions or extended matching questions or few slides on true false type of questions. So multiple choice questions में इन तीन types पे हम detail में बात करेंगे. First, looking at the overall MCQs, their advantages. Obviously, we know that they cover broad learning outcomes and improve reliability of the assessment. क्योंकि उनका number ज़्यादा होता है, तो वो definitely उनकी reliability बेहतर हो जाती है. और examine broad subject area in short time. आपका 2 या 3 घंटे का question exam है और उसमें you have 60 to 100 or 90 MCQs, so we can assess broad areas in relatively short time. A large number of students with relatively few resources. It's not an expensive method of assessment, and generally are marked by optical readers, so marking becomes very easy and is more reliable. And they are not affected by scorers' inconsistencies and are not influenced by student writing ability, because students have to choose just already given options, so these issues are not there. Well-constructed multiple choice questions can be used to assess more complex mental processes. So although generally we think that multiple choice questions are more cued towards assessing the recall, but if we are a bit careful and spend a bit more time, they can assess the complex mental processes as well. For example, comprehension, discrimination, interpretation, analysis, etc. So it depends that how good we are on constructing these questions, and based on that, they can be assessing simply the recall of information, or they can even assess the complex mental processes. They are easily analyzed. जब भी हम इसको OMR में use करते हैं, तो the software automatically gives us the discrimination index, difficulty index, so analysis becomes so easy. Having gone through all those advantages, however, there are some challenges as well. They are difficult to construct in large numbers. So if we have to construct only few questions, that may be okay. But when we have to make a large number of questions and we want to assess especially the complex problems, complex mental functions as well, then it becomes easy. So the usual problem would be the ambiguity in language, और बाज़ सवाल के अंदर ही जो है जवाब का या आंसर का क्यू मिल जाता है. And sometimes we pick up sentences as such from the book. So these make these questions less effective. So that's one disadvantage. As I said, if we want to assess complex learning outcomes, then we have to spend a lot of time on construction of these questions. Right. The next is that whatever statement has, it has to be defensively true or absolutely false. Means the statements where there is different views in the literature, they cannot be used in multiple choice questions, because the options have to be either absolute true or absolute false in most of the questions. And statements with even minor degree of ambiguity will lead to guessing. So guessing is another issue in this multiple choice questions. Even with
although applying the negative marking, but still that issue would be there. The next is very important point. अगर एक स्टूडेंट कहता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, that does not necessarily mean कि उस स्टूडेंट को पता है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या है. We may know that this answer is false, but that does not necessarily mean that I know the right answer. So usually we assume that when student is saying this statement is false, so they know the right answer, but that may not be true all the time. Staff needs to learn how to develop good questions, and obviously the multiple choice questions cannot assess performance and attitude. Right, so that is basically a kind of introduction where we can relate, number one, the objective of assessment to different methods of assessment, and then is the different types of multiple choice questions. The most commonly being used is BAQ, or single best answer question, and extended matching. And obviously there are a number of advantages, especially it's a very, very cost-effective method of assessment. And obviously there are some challenges. So far, anybody want to share any comment or question? Your own experience with it, or we okay, maybe a bit later. We look at the characteristics of different types of multiple choice questions. First, we go through the single best answer type. So the best answer question, that people give different names. Some people say single best answer question, some say one answer question, or best answer question. They are different names, but they mean the same thing. Is a type of multiple choice question in which there is a stem and usually 4 or sometimes 5 options. All the options are correct. That is the special character or special feature of BAQ, that all the 4 or 5 options which are given after the stem are correct to some degree. But one of them is the best, and the student is required to choose the best out of those 5. So the basic requirement of BAQ is that we should not have an option which is absolutely false. There must be some degree of truth in that. And so the correct answer is called the key, and the remaining 3 or 4 options are called the distractors. Again, the second feature here is that the distractors should be plausible. It means that they should not be obviously false. They have some degree of relevance. So in BAQ, there is a stem followed by lead-in question, then is a key, and then there are 3 or 4 distractors. Here is an example. Now, STEM is a 5-year-old boy with congenital heart disease, presents with signs of congestive cardiac failure. The pediatrician decides to start treatment with an anti-failure drug. Right? Very, very simple, very, very simple statement. So this would be the STEM. And the lead-in statement would be that which one of the following anti-failure drugs is most suitable for the treatment of this patient? So this is the lead-in questions. Now, all the 4 drugs there are given are anti-failure drugs, right? So none of them we say is not a drug which is not used in heart failure. They are used in heart failure.
but student has to choose the best option among these four in this particular situation. So these are four options. The right answer is captopril, which would be the key, and other three would be the distractors. So this is an example, a very simple example of single best answer question, which starts with the stem, followed by a lead-in question, and then there are options, and all the options are correct uh, to some extent, and the best answer would be the key, and other would be the distractor. So this is structure of a best answer question or single answer question. As I emphasized earlier as well, the two important features of these questions are that all the options are correct to some extent, but one of them is the best, and the student is required to choose the best option. This is the diagrammatic representation. So we have, let's say, A, B, C, D, and E, 5 options. So the A is the best option, but others are to correct to some extent. Let's say E is more relevant than D, and C is more relevant, and so, but we have to choose the best option, and so that is the characteristic. If you look at the answer sheet, so student has to circle only one, because it's only the single best answer question, so they have to choose only one option. Some further details of each component of a BAQ. The STEM basically introduces the theme or problem, and it should do that very clearly. The STEM should provide enough information, avoiding unnecessary details. Because if we give unnecessary details, not only that would the students would be wasting their time, but it would confuse them as well. So when we are constructing this STEM, we have to be very, very clear and give only the relevant information and avoiding unnecessary information. It is a complete statement which can be answered without reading the alternative. It is called the cover test. This is one method, a good method to assess the quality of a BAQ, that if we have a STEM and we hide the options, so a good student would be able to answer that question even without looking at the options. So this means the STEM is so clear that to find the answer, we do not really need to look at the options. So this is a good method of looking at these questions, that when we construct these questions, maybe we share the STEM with our colleagues and ask them the answer. And if the answer follows whatever we have, that would be the best way of doing it. It generally comprises of clinical scenarios, because they improve the validity of assessment. They are naturally better constructed and usually require problem-solving skills. So this is actually a tip, that if we want to construct these questions, it would be good to use some of the clinical scenarios. Although we can also use in preclinical years. So that was about the STEM. The next are the options. Now, the characteristic of options is that they should be homogeneous, coming from all the same. For example, all diagnosis, all investigation, like the example I gave were all the drugs.
all the anti-failure drugs. So we can now have mixture of things. Whatever is the area we want to test, they all statements should be from the same characteristic and same attribute. All the options are plausible, but there is one best. So none of them is totally wrong. They are reasonable and attractive. Of course, they have to be associated with the STEM, have an element of logic, and have what they call is have a ring of truth. There is some degree of correctness in that answer. So when more, the next point that the options should match in terms of length, complexity, phrasing, and style means that it try to have options which appear similar rather than having, because if we have usually it is said that if the statement is longer, that is usually true statement. Not a tricky or picky option. Avoid interesting but non-essential topics. We do not want to test the minor prints. So our options should be relevant and should be important areas, not the minor prints. And of course, they have a grammatically correct ending in relation to lead-in statement or answer the question, because sometimes we unknowingly prepare these options in such a way that they answer for themselves. So there might be some situations where we do not have, let's say, we have three options which are good, but we cannot find a fourth option which fulfills all the characteristics which we have mentioned. And if we are assessing really an important area at that time, we may use a false distractor. So that would be an exception, not a rule. Okay. So how to format these options? Construct each item to assess a single specific written objective. We should not be assessing more than one so character in one statement. Because if we do that, then it would confuse the student, and it often ends up measuring lower level of competence, or maybe not an important information. Base each item on a specific problem which is clearly stated in the STEM. As I mentioned earlier, if we do that, then by cover test, we can assess the validity and the reliability, especially the validity of that question. Now, here is another so-called BAQ, that which one of the following pathogens is most common cause of bronchiolitis? And then we give influenza virus, adenovirus, respiratory syncytial virus, mycoplasma pneumoniae, or rhinovirus. Now, if you see there is no stem, it straight away starts with the question. And basically, we are simply assessing more or less a recall of information are based on epidemiology. So that does not make it a good BAQ, right? Although it fulfills some of the requirements, but that would not be a good good BAQ. Good BAQ should always have a stem, right? Okay, so that completes our discussion on the single best answer question.
Anyone has any question or comment about the single best answer questions or BAQs? सर आपने 3-4 स्लाइड्स पहले एक स्लाइड दिखाई थी जिसपे लिखा था सिंगल बेस्ट एमसीक्यूज कौन कौन से फुलफिल करते हैं, वो एक दफा दोबारा दिखा दें। एग्जाम्पल से बिल्कुल पहले दिखाई थी आपने उसमें। जी ये वाली, जो ये वाली है, ये वाली जी। Right. So ये this is जी about the STEM. जी So STEM, of course, is introduces the theme or problem. So that is the real problem which we want to assess would be given in the theme, and so should be precise. मैं ये कह रहा था कि अगर इसमें हम unnecessary details डाल दें, so that would be एक तो ये कि student का time waste होगा और दूसरा ये confusing हो जाती है. So when we are constructing these questions and in vetting, we really make sure कि उसमें every word which we are using has some value in that. The complete set ये cover test ये है कि अगर आपने जिस तरह वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो पीडियाट्रिशियन जो है एंटी फेलियर ड्रग यूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा स्टूडेंट जो है इवन विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस वुड बी एबल टू आंसर कि ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, 5 year old चाइल्ड है, उसको हार्ट फेलियर है, तो which would be the best drug to be used. So this means that STEM is clear enough to pick up the right answer. So this is called the cover test. Or usually the clinical scenarios, even when we are preparing questions for preclinical, the STEM usually relates to some clinical situation, although the question may be related to preclinical years. So that's basically क्लिनिकल सर क्लिनिकल वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट कैसे इम्प्रूव कर? इसलिए कि वो रियल होते हैं कि आपने कोई चीज जो है वो इमेजिन नहीं किया, जिस तरह फर्ज करें आप एक पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, blood pressure ज्यादा, so that's a real situation. Or when we talk about real situations, वो are validity actually जो है वो कि आप जो कुछ पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो एग्जैक्टली वो उसका आंसर वो होगा जो आप पूछना चाह रहे हैं. तो ये, और दूसरा ये कि फिर जब आपके पास क्लिनिकल सिनारियोज हो तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता, यू कैन इजीली पिक अप फ्रॉम देयर, आपको आर्टिफिशियल सिनारियो नहीं बनाने पड़ते. any other comments or any other question? एक्सक्यूज मी सर, सर ये हम जो स्टैम्प बनाते हैं वो हम बुक की स्टेटमेंट को नहीं ले सकते, उसमें हमें खुद ही कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए? वो जो बुक की स्टेटमेंट जो है वो यूजली हम ऑप्शन में ले लेते हैं, तो वो जिस स्टूडेंट ने वो चैप्टर पढ़ा वो फौरन पहचान जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो उस बुक से है या उस चैप्टर से है. तो वो मतलब बजाय उसमें हम कंप्रीहेंशन टेस्ट करने की बजाय इन अ वे रिकॉल टेस्ट कर रहे हैं. तो बुक से सेंटेंस लें आप, लेकिन उसको इस तरह मॉडिफाई करें कि वो ऐसा ना लगे कि आपने वहां से कॉपी किया है उसको. जी सर, थैंक यू. Any other comments, any other questions? We are going to the next type, which is commonly used, is extended matching type of multiple choice questions. इसके स्ट्रक्चर में there is a theme. जिस तरह हम बीए की बात कर रहे थे कि उसमें एक स्टेम है और फिर लीड इन क्वेश्चन है और ऑप्शंस हैं,
एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चंस की एक थीम होती है, उसके बाद उसमें ऑप्शन लिस्ट होती है, फिर लीड इन स्टेटमेंट है और फिर स्टेम्स है। इसमें स्टेम्स बाद में आते हैं, सिंगल बेस्ट आंसर क्वेश्चन में स्टेम्स पहले आते हैं। ये एक एग्जांपल है। जैसे थीम है इम्यून रिस्पॉन्स और ऑप्शंस में हमने यहाँ लेट्स से कोई एक लिस्ट दी है जो डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस है। एक्टिवेशन ऑफ टी रेगुलेटरी सेल्स है, लाइसिस ऑफ आरबीसीज है, रिलीज ऑफ मीडिएटर्स है और डिले टाइप ऑफ। तो ये ए से लेके जी तक दे आर ऑल डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। सो थीम है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शंस हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, और फिर लीड इन स्टेटमेंट ये है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज choose the most appropriate mechanism of immune response from the option list provided. अब हमारे पास ये let's say 5 जो हैं वो situations हैं, इनको हमने मैच करना है ये जो 8 हमारे पास ऑप्शन है, right? So we have 8 options and we have 5 scenarios और इनको हमने मैच करना है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सटेंडेड मैचिंग, क्योंकि ये इसमें ऑटोमेटिक मैचिंग का जो है चॉइस नहीं होता। अब जो है लेट्स से इफ वी रीड द फर्स्ट सिनेरियो, एन 18-year-old girl developed extensive redness with mild itching in the neck after she started wearing a necklace containing nickel, and she was diagnosed to have कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। अब डायग्नोसिस हमने बता दिया कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। अब स्टूडेंट ने ये देखना है कि उस लिस्ट में कौन सा मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस से मिलता है। स्टूडेंट इस लिस्ट को दोबारा देखेगा और राइट कि इसमें से कौन सा मैकेनिज्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में इन्वॉल्व होता है, और दैट वुड बी द डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, राइट? सो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है मैच करते हैं। सेकंड, जैसे 37-year-old woman gradually developed swelling and pain in the right knee over past 6 months. She was diagnosed to have rheumatoid arthritis. यहाँ भी डायग्नोसिस जो है बता दिया गया है, and then student has to match this with what type of immune response is there. So deposition of immune complexes would be the right answer. So in this way, there is a theme, immune response. Then their options are different mechanisms of immune response. Then there is a lead-in statement requiring students to match these scenarios with the relevant options. So, and their number does not match. The options are 8, whereas the scenarios are 5. This means that one scenario can be used multiple times, or one scenario may not be used at all. The students are clear about it that if there is one scenario which has been used once, that does not mean that scenario cannot be used again, right? So that's how it's, that's why it's called the extended matching type. So एक तो ये है कि उनका नंबर डिफरेंट है, सेकंड ये है कि one statement can be used or one option can be used for multiple times, and some options may not be used at all. Right? So another example of extended matching type of question. So theme is chest pain. Options: causes of chest pain. So angina hai, aortic stenosis hai, chondritis hai, or dissecting aneurysm of aorta hai. ये different जो हैं. Yeah, अब इसमें so these
So theme is chest pain, and then are the causes of chest pain. And now we have for each of the following patients with chest pain, select the most likely cause from the option list provided. और फिर हमने एक scenario दिया यहाँ. A 72-year-old man presents with worsening chest pain of 1 hour duration that feels like someone tearing my chest. The pain radiates to his back, and on examination, the blood pressure is 160/90 millimeter mercury in the right arm and 105/70 in the left arm. And a murmur of aortic regurgitation not previously present is heard. Right? Now, student को ये analyze करना है, ये जो stem है, and then उसको match करना है कि इसमें ये जो causes हैं, which of these causes is most likely the cause of pain in this patient, right? Again, if you see, there is a number of options is more than the scenario. And so student has to really analyze the situation and pick up the right. इसी में another stem, a 48-year-old man presents with recurrent episodes of burning chest pain located at the level of the lower sternum. The episode lasts 15 to 45 minutes and are frequently relieved by drinking milk. The pain is often precipitated by lying supine or eating a large meal, and then student has to choose the right answer from the list. Now, there is something important which we need to look into in these causes. इसमें जो है, let's say there are if we see the cardiac causes, angina, aortic stenosis, dissecting aortic aneurysm, mitral valve prolapse, myocardial infarction, or pericarditis, these are all cardiac causes. फिर आप देखें तो इसमें infections के probably दो हैं, costochondritis और herpes zoster, right? इसमें अगर आप देखें तो gastroesophageal reflux या GI खाली एक option. So that is the problem in this question, because if we are giving this second scenario, which clearly relates to GIT, so and student look at the list and there is only one option related to GIT, they would automatically pick up that. This means that when we are giving the option list, so if the option lists are coming from different systems, there should be at least 2 options from each system so that student has to think before picking up any option. But if, for example, in this question, there is only one option related to GIT, so they would automatically pick up that, even though they don't know that that's the real answer. All right. So this is the extended matching question. We use it quite frequently, these type of questions. Right. Any question or comment on extended matching questions before we go on to the next type? No, sir. No? Okay. Now the next one is the what we call is true false type or X type. I'm just sharing this. You might be using these type of questions, but generally they are not recommended anymore. And most of the institutions are not using this because these type of questions are mainly related to recall of information. So in this question consists of a stem and 4 or 5 options. Each option is stand-alone statement, means इसमें जो भी option है
we have to answer each option. Each option must be answered true or false. BAQ में जो first था उसमें we have to choose only one. We don't have to touch others. Extended matching में we have to match. Whereas in this, for each statement, we have to say yes or no. So, because each statement is stand-alone, a complete statement. So, that's why we have to, when we use the marking sheet, so for each, we have to pick up whether it's a true or false. A candidate needs to answer whether option is true or false. A correct answer to each option is worth 1 mark. So each type X question as a whole is therefore worth 4 or 5 marks. Okay. अगर आपने जो है true को true लिखा और false को false लिखा, so you would be given marks for both. In case of type X question, the examinee is to select the correct options, which in a 4-option item may be one or many. So there can be all false, there can be all true, or there can be some true and some false. So all kind of combinations are possible. Operationally, the examinee has to follow a simple instruction that there may be one or more correct options for the item. And by using type X questions, multiple concepts, application phases of a topic, and cognitive skills of various levels of hierarchy can be tested. Here is an example here. Now the STEM is very simple. The typical features of measles include maculopapular rash, conjunctivitis, Koplik spots, splenomegaly, or strawberry tongue. So student has to say a true or false for each of these statements. And if you see, it's mainly the recall. There is no analysis or not much thinking about it. Simply, if you either you know or you do not know, and that's why these questions are not being used anymore, because it does not test the higher mental functions. It simply tests the recall of information. So STEM or heading can be in the form of a question, an incomplete simple statement, a short clinical scenario, a laboratory report, or even a picture. So that's the about this type of questions. So basically, if we look at the characteristics of MCQ as a whole, all different types. So the STEM can be in the form of a question, incomplete simple statement, short clinical scenario, laboratory report, or a picture. And the options are stated replies, which may be either absolutely true, absolutely false, but in cases of BAQ, they may have some different characteristics. A correct response is the key, while the incorrect response is called a distractor. Right, so that is the 3 types of the multiple choice questions. Next, we have a hands-on activity. So I will divide the participants into the 3 groups in your breakout rooms, and then here each group would make one type of a question. Let's say room 1 would make a true-false type of question. Room 2 would make a BAQ, and room 3 would make an EMQ. So this would be, let's say, a 10-minute activity. And then once you have these questions ready, then we can discuss about it.
Right? Just remember, group 1 is false type, type X. Group 2 is BAQ, and group 3 or room 3 would be an EMQ. I will divide you in these 3 breakout rooms, and then you please join those rooms. Okay, so please join your rooms. Room 1, so far only Kuratulan has joined. Room 2, 3 people have joined: Major Khatun, Major Maria, and Waqar Hassan. Room 3 is also, yeah, four people have joined. Room 1, only Kuratalan. 3 are others not around: Dr. Salman Rana, Pakiza Aslam, Shaheen. Please join your breakout rooms. Sir, me and Muhammad Azim Rana, we are the Igeo Life team. Sorry? So Muhammad Azim Rana and me are the Ji. members of Igeo Life team. Oh, I see. So Muhammad Azim will not join, sir. मैंने कहा सर आपको बता दूं Okay, सर. yeah, okay. So, but in room 1, Dr. Salma Rana, Dr. Pakiza Aslam, Shaheen, because it's only one person there in room 1. Would somebody would like to change the room so that you move from your room to room 1, so that there is Kuratul has some another person in the room so they can discuss, or Kuratul has to prepare alone? Sir, I think EDU Life admin has to divide us. Okay. Is there anybody who want to move to room 1? Yes, sir, I can move there. Sorry, your name, please. Sir, Dr. Kutsia. Dr. Kutsia. At the moment, you are in which room? Dr. Kutsia, in which room are you at the moment? Sir, you are suggesting room 1, that's fine. Okay. Now this Dr. Pakiza Aslam and Sir, I am Kuratul. in the main window, not in any room. Okay. You want to join room 1? I'll send you to room Sir, 1. I am in the main group. I'm not in the All room. right. Yeah. Okay. So you can join room 1 now, please. Dr. Muhammad Siddiq can also join room 1. Yeah, now we have enough people in room 1. Dr. Siddiq, you can please join room 1. Okay, so in, let's say, about 10 minutes, time for you to prepare the question. Room 1 is a true-false type. Our time, 10 minutes. Room 1, true-false type. Room 2, single best answer question. And room 3, extended matching question. Right, so after 10 minutes, we will close the room and then we'll come to the main window and discuss these questions. ये सब लोग आ गए? हाँ जी सर. Right. Okay, shall we start with room 1? जी सर. Yeah, you can share your slide, please. जी. So सर हमारा टास्क था ट्रू फॉल्स टाइप एमसीक्यू टाइप एक्स. सो हमने थीम रखा है ब्रीच मैडम, प्रेजेंटेशन. ये स्क्रीन बड़ी कर लें आप. जी एक सेकंड. जी, thank you. जी Yeah. जी.
सर थीम हमने रखा है ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड द स्टेम इज Mrs. X is a 28-year-old priming gravida. She has extended breech presentation at 37 weeks. Ultrasound shows estimated fetal weight 2.8 kg, amniotic fluid index 9 and placenta is fundal. Lead in. Which of the following statements are correct about this patient? फिर हमने 4 ऑप्शंस रखे जिनमें ट्रू और फॉल्स मार्क करना है. Option 1, patient can have vaginal delivery. B, baby is at risk of intrauterine fetal death. C, patient can have external cephalic version at this gestation. And D, patient has a high risk pregnancy. और नीचे हमने की दिया हुआ है true and false प्रश्न. All right, good. Yeah, any comments from other participants, please? This is a type X question. So does this follow the type X? Any comments from any other participant, please? Now we have to see based on the features which we discussed with true false type of questions. Does this question follow that format? Any comments from anybody in other groups? सर आप गाइड करते, कोई बता ही नहीं रहा. सर आप ही बता दें प्लीज. Right. Okay. Now सर इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा. हाँ, थैंक यू. The true false type of questions, actually we do not need to have a theme or the heading like STEM. We straight away start with the statement. So like then it's okay. The fine. Mrs. X is a 28-year-old priming gravida. She has extended breech presentation at 37 weeks. Ultrasound shows estimated fetal weight is 2.8 kg. Amniotic fluid index is 9 and placenta is fundal. So basically you do not need to type the theme. You do not need to type the STEM, and you do not need to type lead in, because the true false type is just straightforward. We don't have to type these things. ठीक. Now, which of the following statements are correct about this patient? Now, if you look at this question, we are asking which of the following statements are correct about this patient. And so if student, according to your answer, student only circles A and C, right? Because you are asking the correct statement, right? You are not asking. थोड़ी देर के लिए नजर आई थी. थोड़ी देर की नजर आई थी जी. शेयर सर उसको मैं चलें वैसे पढ़ दें फिर. जी सर. Yeah. Sir, the STEM is a 26-year-old male presented with severe abdominal pain Right. since last 2 hours Right. and had 2 episodes of vomiting. Right. On obtaining the history, the pain was initially diffuse and generalized, which Right. later on became localized in lower abdomen. On Right. examination, rebound tenderness is positive, and Right. TLC is up to 13,000 on CBC. Right. Which of the following will be the most appropriate diagnosis? Right. Guess, sir, iski 5 options hain, sir. Yeah. Number 1 is the gastroesophageal reflux. Right. B is the peptic ulcer. C Right. is the acute pancreatitis. D is the intestinal obstruction. And Right. E is the acute appendicitis. Right. Yeah. Now, I think if we look at the STEM, that is very clear. Yes, sir. If we do the cover test, we can say safely that this is appendicitis. Yes, sir. Right? Even I can diagnose that it's appendicitis. जी सर. Right. फिर 2 Now, बातें हैं ना. एक जी. तो उन्होंने मेजर मारिया ने बोला कि ये लोकलाइज हो रही है लोअर एब्डोमेन में, तो फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स इसमें नहीं लिख सकते थे ना. वही हम ऑप्शन की तरफ आ रहे हैं कि ये जो है, ये अब जो
आपका डायग्नोसिस वहां बहुत क्लियर है। जब हम ऑप्शंस पे आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अब हमने वहां लिखनी है जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं अपेंडिसाइटिस की, जी सर। राइट? यस सर। इसमें जो है लेट्स से आपने क्या कहा, अपेंडिस, पहले आपने कहा गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, यस सर। राइट? वो तो यस। हाँ, वो थोड़ा फार फेच्ड आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरह पेप्टिक अल्सर, सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला बात देखे ना, ट्रू फॉल्स, और इसमें जैसे एमसीक्यू में तो हम डिस्ट्रैक्टर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं ना, जी तो जैसे ट्रू फॉल्स में भी करना चाहिए। हाँ, तो ये बेहतर होता है जी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वो जनरली हम ट्रू पहले लिखते हैं और फॉल्स बाद में लिखते हैं। जी। तो उससे अगर हम अल्फाबेटिकली कर लें, आप बेशक शुरू में जैसे मर्जी ऑप्शन बनाएं, बाद में अल्फाबेटिकली कर लें तो वो ज्यादा वैलिड हो जाता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आए तो ओके, अपेंडिसाइटिस इज द की। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स प्रॉब्ली would be a bit far-fetched idea। और कौन सी थी, एक पेप्टिक पेप्टिक अल्सर। अल्सर भी नहीं था उससे, Right। बाकी जी। ठीक है। हाँ पैनिक, हाँ जी। हाँ, तो इसमें अदरवाइज आई थिंक it's a very good question। जी। The stem is very clear। You can do a cover test and you can tell the most likely diagnosis। और ये अब इसमें आपने सारे डायग्नोसिस रखे हैं। If you want you can give all investigations also। That's इस पेशेंट में आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, एंड यू कैन गिव ओके, अल्ट्रासाउंड है या सीटी स्कैन है, या आपने टोटल वाइट इसमें दे दिया है। तो अगर आई थिंक जनरली आई वुड से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस के वो जो है सारी रेलेवेंट बने। रेलेवेंट होनी चाहिए। जी सर, ठीक है। हाँ, गॉट इट सर, हाँ, थैंक यू सो मच। इजी ये है कि जो आपका अपेंडिसाइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सर वो हमें नॉलेज का पता चल जाएगा कि जो है ना, वो स्टूडेंट का नॉलेज अबाउट एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज क्लियर। राइट राइट। यस सर। ओके, गुड, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट ग्रुप, रूम 3। Sir, theme of my question is nursing theories. ओके, And the statement is, which of the following nursing theorists develop a conceptual model based on the belief that all persons strive to achieve self-care? राइट। Sir, options are Martha Rogers, Dorothea Orams, Florence Nightingale, and Calista Roy. Okay, now this is supposed to be extended matching question, right? Yes, sir. Yeah, any comments? Anybody has any comments? सर सॉरी, ये ना एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मतलब Yes, sir, ये तो MCQS सिंगल बेस्ट वाला, हाँ, सिंगल बेस्ट वाला बन गया ना, एक्सटेंडेड मैचिंग नहीं है। वो भी फैक्चुअल नॉलेज वाला, पीछे करते हो। तो बेसिकली और ये रिकॉल पे है और ये एक्सटेंडेड मैचिंग नहीं है, अनलेस आप ये करते कि ये जो आप डिफरेंट थ्योरीज लिखते और उनको आप मैच करवाते इन ऑथर से, वो भी ज्यादा रिकॉल हो जाता, क्योंकि इसमें एनालिसिस नहीं है। जिस तरह हम अब पिछला क्वेश्चन देख रहे थे BAQ, उसमें एनालिसिस आ जाता है, स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करनी है और एक डायग्नोसिस बनाना है, तो ये क्वेश्चन उस पे फिट नहीं आता है। सर ये मैंने शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, अभी ये लंबा था तो पूरा हमसे अभी लिखा भी नहीं गया सर। और हम तो एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन बनाते भी नहीं है, इतना कोई इसका है तजर्बा ना। तो ये लिखा है थीम, अगर मेरी स्क्रीन सर शेयर हो रही है, ये इतनी सी तो शेयर हो रही है। जी सर, ये थीम मायोकार्डियल इंफार्क्शन और फोकस इसका कॉम्प्लिकेशंस पे है। ये अभी ये आगे इसको थोड़ा, ओके, थीम मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, फोकस कॉम्प्लिकेशंस है,
और ये और आंसर क्वेश्चंस ये हाँ, सर वो तो है ऑप्शन और ये आपने लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन दे दी है, A63, arterial fibrillation, cardiac tamponade, complete heart block, deep vein thrombosis, और उसके बाद जो है काफी सारी ऑप्शन है, वेंट्रिकुलर आपने टैकिकार्डिया, तो हाँ स्टेबल एंजाइना है। बहुत ऑप्शंस हो गई। अच्छा, जी उसके सर, बाद ये लीड, हाँ, क्वेश्चन या ये है राइट, कि फॉर या ईच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स विद अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन सिलेक्ट द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसका हमारा फोकस कॉम्प्लिकेशंस पे है, थीम एमआई राइट, है। या एब्सोल्युटली ईच राइट, ऑप्शन आई थिंक दैट्स सर या तो वंडरफुल। each option may be used only once or more than once or not at all। जरूरी नहीं, क्योंकि राइट, ज्यादा ऑप्शन है तो जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन यूज ही हो। एब्सोल्युटली पहला राइट। स्टेम ये है कि 72-year-old man is admitted to the hospital following a myocardial infarction. 7 days later, he is noted to have severe dyspnea. On examination, he is pale and his right leg appears swollen compared to the left. Cardiac apex, fifth intercostal space, mid-clavicular line. There are no murmurs audible, but there are occasional bibasal crackles in the chest. His pulse ये है कि 128 है, BP 98/55 है, टेम्परेचर दिया है और JBP उसका रेज्ड है। सर इसकी ये हमारे ये है ऑप्शन, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Right. Okay. Dr. Sab, I think this is a wonderful question. आपने उसके फॉर्मेट को बिल्कुल फॉलो किया है और आपने वो दे। अच्छा, इसमें ये जो ऑप्शन लिस्ट है वो आपको थोड़ी लिमिट इस तरह करनी होगी कि जो ऑप्शंस हैं वो बहुत करीब हो। जी सर, ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऑप्शंस अगर स्ट्रेट अवे इतनी क्लियर हैं कि वो पहले से ही आउट हो जाती हैं तो उनको देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक सर। अगर आप 2 स्टेम दे रहे हैं तो आप 5 ऑप्शंस दे दें। ठीक सर। हाँ, लेकिन वो ऑप्शन इतनी करीब हो कि स्टूडेंट को सोचना पड़े कि ये पहली है या दूसरी है। जी सर, ठीक है। Otherwise, I think it's the format is excellent. आपकी थीम अच्छी है और आपने कॉम्प्लिकेशंस राइट और फिर एक लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लेट्स से 5 कॉम्प्लिकेशंस आप लिख दें और इसमें आप ये 2 सिनारियो दे दें, लेकिन वो इस तरह हो लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के वो करीब हो, कोई स्ट्रेट अवे स्टूडेंट ना कह सके कि ये तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। जी सर, ठीक, थैंक यू। वंडरफुल। सर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल थी, इससे EMQ समझ आया, बहुत अच्छी उन्होंने। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। Right. Any comments, anybody? Do you सर want? EMQs चलता है कि although it's a difficult task but we can do this। Yes. थोड़ा सा सर It's टाइम actually कंज्यूमिंग है, लेकिन हाँ जी इसको हम फॉलो कर सकते हैं इजीली। और ये बहुत सर्चिंग है, ये रियली जो स्टूडेंट की एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, ये उसको टेस्ट करता है। ये सिंपली रिकॉल को टेस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने उस स्टेम को देख के, सिनारियो को देख के और फिर जो है आपने उस लिस्ट को देखना है। उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ऑप्शंस हैं दे शुड बी क्लोज एनफ, और जो है वो अगर मल्टीपल सिस्टम से हैं तो हर सिस्टम से मिनिमम 2 हो, ताकि स्टूडेंट जो है उसके बारे में सोच सके। जी सर, डिस्ट्रैक्टर्स में ही प्रॉब्लम होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट कैसे करें ना स्टूडेंट को। जी सर। इनफैक्ट जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें डिस्ट्रैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है कि कितने स्टूडेंट ने, अगर एक डिस्ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा स्टूडेंट पिक करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्टर है। तो जब हम क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो वी कैन इवन एनालाइज डिस्ट्रैक्टर के, एक डिस्ट्रैक्टर को अगर किसी एक डिस्ट्रैक्टर को किसी एक स्टूडेंट ने भी पिक नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रैक्टर इज नॉट रियली गुड डिस्ट्रैक्टर। Right, good, thank you very much, thanks. Thank you, sir. Right, now do you want to have a break before we continue? Yes sir. Yes sir, please। थोड़ी सी ब्रेक। Right, okay, अभी मेरे 10 पास minutes।
इस वक्त मलेशिया में 1:45 हैं, तो 2 बजे तक we have 15-minute break. 15 minutes. Right. Okay. Thank you so much, sir. Thank Thank you. Thank you. Waqar Saab, Waqarul Hassan Saab, are you okay with that? Can you hear me? Assalamu alaikum, sir. Can you hear me, sir? Are you okay with this? आपने topic कोई choose कर लिया है और objectives लिख रहे हैं? जी सर, मैंने टॉपिक भी चूज कर लिया है और 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी चूज कर लिए। Right. Okay. Good. अगर आप चाहें तो मैं शेयर कर दूं आपके नहीं, साथ। we'll share later. I just wanted to make sure that you have done it before we move further. I have done that, sir. I have done that. Is it okay? Can we move to next step? Okay. Now, number 3 is decide what type of question you want to make. You want to make short essay question, or you want to make short answer question. Short essay question means that the scenario is short, but the answer would be in form of a paragraph. Whereas short answer question means that you are giving a scenario and student has to interpret or answer only just few words. So you decide whether you want to write a short essay question or a short answer question. So you have chosen a topic, you have identified the objectives, what you want to test about that topic, and then you decide whether you want a short essay question or a short answer question. If you want a short answer question, so you need to write a scenario, maybe few lines of the scenario, but if you want a short essay question, so you need to identify the question. एक्सक्यूज मी सर। Yeah. सर ये शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन का क्वेश्चन जो है वो सिंगल लाइनर होगा और आंसर आपने कहा है कि पैराग्राफ में होगा इन लेंथ। यूजुअली मतलब जरूरी नहीं है एक लाइन में हो, लेकिन ये कि मतलब शॉर्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन शॉर्ट है, आंसर जो है वो लंबा है। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट आंसर में जो सिनेरियो लंबा है और आंसर छोटा है। आंसर छोटा है। ओके, थैंक यू सर। Okay, everybody done that? Okay, so the next step. Now write a concise and clear question. The question should be specific and to the point so that students know exactly what is expected. And start the question with an action verb like analyze, evaluate, explain, interpret, discuss, something, some action verb. If you have a short answer question, so maybe you will say, okay, interpret this report. Or if you have the short essay question, then you would have explain or justify or analyze or give a diagnosis along with your justification or reasons.
Major Khatun, are you okay with that? Is everybody okay? Then we move to next step. Please. Yes, sir. Yes, sir. So we are. Yes, sir. Okay. Now the next one. Yes, sir. Now, when you have written the question, make sure that you are not using double-barreled question, means that you are not testing two things in one question. Example, discuss the pathogenesis of symptoms and draw a plan of management. So in this question, there are two things being tested. You make sure that either your question is on pathogenesis or question is on management. It should not be a double-barreled question. We cannot test two different things in one question. Okay, the next. Now look at your question and judge whether you are really testing a critical thinking. We do not want to test the rote memorization. Design the question to promote critical thinking, analysis, and synthesis of information. And if you think that your question needs some background, like description of the patient or the whatever, you can add that in your question. Just look at your question. Are you really testing some important areas? You are not simply asking the rote memorization. Some critical thinking, analysis, decision-making kind of skills. And if you want to give some background information, please add in your scenario. Okay. The next step, define grading criteria. How would you mark that question? This means that we should have model answers and to mark, how to mark them. I'll show you an example here. Can you see the screen, the word screen? Anji, sir. Right. So this is a SEQ. Here we are giving Daniel, a 9-month-old boy, is admitted to pediatric ward with complaints of fever for 4 days, excessive crying and vomiting of 2 days duration. He has one episode of generalized tonic-clonic fit 2 hours before arrival. On examination, he is drowsy, irritable, and his body temperature is 39.5 degrees centigrade. Other vital signs are normal. His anterior fontanelle is bulging and he has hypertonia and hyperreflexia of all the limbs. Examination of other systems is unremarkable. He is suspected to have meningitis, and then we give the lumbar puncture report. Now, in this question, you will see the examples of both short answer and
short essay question. Now this is after giving this, state the most likely diagnosis. So here it is a short answer question. State the most likely diagnosis. So we have given a long scenario under the report, and we are simply asking the most likely diagnosis, right? And we have given two marks for that. Another short answer, name another test you would like to do on CSF to confirm the diagnosis. So on this scenario, we can ask multiple short answer questions. Now next, describe the significance of bulging fontanelle in Daniel. Now this becomes a short essay questions now because they have to describe it. Then state 3 precautions that you should take, should be undertaken before for performing lumbar puncture. So another short essay questions. And you see that the model answers are there and the marks are given. Similarly, another short essay question, explain the pathogenesis of increased protein level in the analysis of above mentioned CSF report. So this is an example using a scenario, and we can have short answer questions, and from that we can have short essay questions as well. But सर इसमें हम ये मेंशन करना जरूरी है सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस जिस हमने मेंशन किया है तो इसमें जब हम उससे डायग्नोसिस पूछ रहे हैं और डिफरेंशियल सॉरी फिर से कहिए प्लीज, आप मेरे ख्याल म्यूट हो गए। जिस तरह सर ये लिखा हुआ है कि ही इज हैविंग सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, तो ये हमें मेंशन करना जरूरी है सिनेरियो में, क्योंकि हम आगे भी तो पूछ रहे हैं ना उससे डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। राइट, नो उसमें जो क्योंकि जो जब आप फर्ज कर रहे हैं इसको यहाँ से आप निकाल दें, बेशक निकाल दें, ये जरूरी नहीं है ही इज सस्पेक्टेड टू हैव मेनिंजाइटिस, और देन फिर सीधा आप पूछ लें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो यहाँ एक्चुअली ये मेनिंजाइटिस इसलिए उन्होंने लिखा कि उन्होंने CSF की पिक्चर देनी थी, लेकिन आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप इसको निकाल सकते हैं। आप वो निकाल के हम अगर CSF की फाइंडिंग लिख दें कि द CSF फाइंडिंग जिस तरह उन्होंने दी हुई है, हाँ जी, बिल्कुल सही, तो भी थोड़ा सा अंडरस्टूड तो हो ही जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल निकाल दें उसको, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाद में आप यू आर राइट, आप ये पूछ रहे हैं स्टेट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, राइट? आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट। एनी अदर? जी सर, अगर हम 2 मार्क्स का हमको डायग्नोसिस पूछ रहे हैं तो फिर हमने डायग्नोसिस तो पहले खुद ही प्रोवाइड कर दी ना। हाँ, वो एक्चुअली ये आपने डिफरेंशिएट अगर आप करवाना चाहते हैं कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या वायरल मेनिंजाइटिस है या फंगल मेनिंजाइटिस है, उसमें जा सकते हैं, लेकिन यू कैन इजीली रिमूव दैट लाइन। इसको यहाँ से डिलीट कर दें आप, इट वुड स्टिल बी ओके। Right? Any other comments or questions? तो ये बेसिकली इसमें हम दे रहे हैं कि ये मॉडल आंसर और उसके मार्क्स। Right? So let's move to the next one. So ये हो गया grading criteria. The next step is now look at your question and assess कि आप अगर आप ब्लूम टेक्सोनोमी यूज करना चाह रहे हैं या आप मिलर्स पिरामिड यूज करना चाह रहे हैं तो कौन से लेवल पर है आपका क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये है जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो
कौन से लेवल पर है, रिकॉल पर है, अंडरस्टैंड पर है, एप्लीकेशन पर है, एनालाइज पर है, इवैल्यूएशन और क्रिएशन पे है, राइट। तो इससे हम असेस कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कौन से लेवल पर है। तो जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है, कैन यू हैव सम आइडिया कि आप ब्लूम टेक्सोनोमी के हिसाब से कौन से लेवल पे असेस कर रहे हैं? Is it recall or comprehension or application of knowledge or analysis? जिस तरह आप कह रहे हैं, फर्ज करें कि इस CSF की रिपोर्ट को एनालाइज करें, या आपने कोई एक ये सिनेरियो एप्लीकेशन वाला था सर, जिसमें हमने जी वो एप्लीकेशन पे था सर ये वाला जो अभी इसमें, हमने। हाँ जी, एब्सोल्युटली, या इसमें एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, एनालिसिस, हाँ जी सर, एनालाइज करें, हाँ जी। राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आप अपना उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर लिखिए। जो भी आपने एक पहले टॉपिक चूज किया, आपने ये डिसाइड किया कि उस टॉपिक को आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स आप उसमें असेस करेंगे, राइट। और फिर आपने डिसाइड किया कि आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाएंगे या शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, राइट। फिर आपने वो क्वेश्चन सिनारियो लिखा और क्वेश्चन लिखा। अभी आपको आइडिया हो गया है कि मार्किंग स्कीम कैसे बनानी है, तो आप एक मॉडल आंसर लिखें और उसकी मार्किंग स्कीम बनाएं। You have few minutes for this. जब आप मॉडल आंसर लिखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपका क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है, कि मॉडल आंसर जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो वही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। बाज़ औक़ात हम पूछना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन आंसर कुछ और लिख देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये एक्टिविटी अभी प्रॉपर जो है हम रूम में करेंगे ना? जी जी, ये तो अभी इंडिविजुअल लेवल हाँ, पे आप करा रहे हैं। हाँ, ये इंडिविजुअल लेवल पे आप करेंगे। उसके बाद जब रूम में जाएंगे तो आपके ग्रुप में जितने लोग हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे ठीक है और सर, ठीक हाँ, उसको फिर प्रॉपर करेंगे। ये सिंपली प्रेपरेशन है उसकी। बेसिकली इस तरह से राइट सर। हाँ, हम स्टेप्स में से गुजरे हैं कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं। राइट सर। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि पहले जो रूम्स बनाए थे अब पार्टिसिपेंट्स अगर स्विच कर लें ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स का ज्यादा इंटरेक्शन हो जाए एक दूसरे के साथ। चलिए, मैं उसकी दोबारा से ग्रुपिंग कर देंगे। जी सर, दोबारा से, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बिल्कुल भी मिले हुए भी नहीं है, तो अब पहले तो एक रूम बना दिए लेकिन अब रूम जरा डिफरेंट कर दें सर, ताकि ज्यादा रूम में जरा इंटरेक्शन हो जाता है एक सही दूसरे है, स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो आपने सोच लिया है, यू हैव रिटन फ्यू लाइंस, व्हाट वुड बी योर मॉडल आंसर, राइट। सो ऑब्वियसली ये स्टेप बाद में होगा कि जब आपने क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया है, उसके बाद जो स्टूडेंट्स ने उस पे रेस्पॉन्स किया है आप उसको एनालाइज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी। ओके, I'll make the rooms जो हैं
दोबारा से Okay, now there are 3 rooms now, room 1, room 2, and room 3. 5 people in room 1, 4 in room 2, and 4 in room 3. Please join your rooms. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम सर। So everybody is back. जी सर। Yes, sir, Ma'am Shehnaz and Ma'am Khalda cannot join the rooms. Kindly, sir. Anyway, now because the activity is complete now, maybe they can join the discussion. Sir. All right. Okay. Can we start with room 3? Please share Yes the sir। screen. Yes sir। Share the screen. जी। सर ग्रुप 3 हमारे ग्रुप में डॉक्टर कुरतुल्लाह एंड मेजर जुबैदा, मेजर समीना और मेजर राहिला हैं। हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाया है। हमने टॉपिक चूज किया है मिसकैरेजेस और उसमें सब टॉपिक लिया है थ्रेट एंड मिसकैरेज। हमने लर्निंग आउटकम 2 बनाए हैं। फर्स्ट टू इनलिस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ थ्रेट एंड मिसकैरेज एंड सेकंड टू जस्टिफाई इन्वेस्टिगेशन ऑफ थ्रेट एंड मिसकैरेज। और फिर हमने क्वेश्चन बनाया है कि 28-year-old gravida 3 para 0 with 2 previous miscarriages is at 9 weeks gestation. She has reported with painless vaginal spotting for 2 days. She is worried she might be having another pregnancy loss. On examination, cervix is normal looking, os is closed, and uterus is appropriate for gestation with clear adnexa. Question A, what is your differential diagnosis for the patient? And B, what justify investigations you will advise her? हमने Right. ये सोचा है कि ये एप्लीकेशन और एनालिसिस लेवल के लिए क्वेश्चन है। Right. Okay. और हमने इसका जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया बनाया है उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट। तो इसमें हमने उसकी जस्टिफिकेशन 7 आंसर में लिखी है कि अर्ली प्रेगनेंसी विद वजाइनल स्पॉटिंग, क्लोज्ड ऑस, यूट्रस साइज सेम एज डिसीजन, सो लाइकली अ थ्रेट एंड मिसकैरेज। अदर लेस लाइकली इज इनकम्प्लीट मिसकैरेज एज शी हैज ब्लीडिंग बट नो एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट। सेकंड हमने जस्टिफाई इन्वेस्टिगेशंस यू विल एडवाइजर, इसको 3 मार्क्स दिए और इसमें हमने 3 इन्वेस्टिगेशन लिखी है। अल्ट्रासाउंड which will help to see fetal cardiac activity and gestational age, ये investigation की justification लिखनी चाहिए स्टूडेंट को। blood complete to assess anemia and baseline health, and blood group and RH factor to identify research status and be prepared in case patient bleeds heavily। ये हमने इसकी की बनाई ग्रेडिंग बनाई है। Good. Thank you. Good. Can we go to the first page? जी सर। Right. Now, the next one, please. Yeah, with जी सर। 28-year-old gravida 3 para 0 with 2 previous miscarriages is at 9 weeks gestation. She has reported with painless vaginal spotting for 2 days. She is very worried she might be having another pregnancy loss. So it's a very good scenario. On examination, cervix is normal looking, os is closed, and uterus size is appropriate for gestation with clear adnexa. Okay, now come to the first question. What is your differential diagnosis for this patient? आपके जहन में कितने differential diagnosis हैं? सर हमारे जहन में बेसिकली 2 ही थे क्योंकि हमने पेशेंट को के एग्जामिनेशन बड़ा क्लियर साथ बता दिया है, हिस्ट्री के साथ एग्जामिनेशन बता दिया, तो हमारे जहन में 2 ही आ रहे थे। अच्छा, उसमें मैडम यूं करें कि ये जो आप क्वेश्चन है उसमें आप ये लिखें कि लिस्ट 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जी ठीक है। हाँ, ठीक है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं तो ये वेग है, स्टूडेंट को नहीं पता कि आप कितने पूछना चाह रहे हैं।
ठीक है लिस्ट 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब आपका मार्क भी क्लियर हो गया कि हर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए 1 मार्क है। जी ठीक है। अभी अच्छा आप ये बताइए कि अब अगर आपका ये सिनारियो और ये क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये शॉर्ट एसे क्वेश्चन है? हमने तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाया है। राइट, गुड। जी सो जो पहला है ये, चूंकि एक सिनारियो लंबा है, आपने खाली डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा है और जी जो है और उसका शॉर्ट आंसर होगा, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। जी अगर आप इसको दूसरा है जस्टिफाई इन्वेस्टिगेशन, यू विल एडवाइज हर। जी हाँ, तो अब इसमें भी स्टूडेंट को नहीं पता कि आप कितनी इन्वेस्टिगेशंस चाहती हैं, ठीक है। राइट? सो जी लेट्स से आप पहले तो लिखें कि जिस तरह पहले आपने लिखा है कि लिस्ट 3 इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। हाँ, लिस्ट 3 इन्वेस्टिगेशंस यू वुड एडवाइज हर। जी और फिर अगर आप अब अगर आप यहाँ पे छोड़ दें तो ये शॉर्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आप ठीक ये है। लिखें कि एनलिस्ट 3 इन्वेस्टिगेशन, यू वुड एडवाइज हर गिव रीजंस फॉर आस्किंग ईच इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ठीक है। तो वो आपका शॉर्ट ऐसे हो जाएगा। ओ ठीक है ठीक है ठीक है सर। या क्योंकि जब ठीक है। आप जस्टिफिकेशन कहेंगी तो वो एक पैराग्राफ हो जाएगा, तो वो जी क्वेश्चन ठीक है। जी ठीक है। राइट। समझ अच्छा, गए सर। अब अभी आप इसमें ये कह रही हैं कि आप जो स्टूडेंट है वो एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को जी और उस पे और फिर वो इन्वेस्टिगेशंस नॉलेज की अप्लाई रिजल्ट करेंगे। देंगे। हाँ, तो जी ये डेफिनेटली ये हायर लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे जी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। जी राइट, अभी आप आंसर दिखाइए, नेक्स्ट आपने आंसर दिखाइए। जी या तो अभी जो है आप उसी अब आपको मार्किंग में आसानी हो जाएगी। जी जी जब आप 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं तो 2 मार्क है हर एक का, एक हो गया। इसी जी तरह अगर आप कहते हैं 3 इन्वेस्टिगेशंस तो 3 मार्क्स फॉर एग्जांपल आप लिस्ट के ले लेते हैं और अनदर 3 फॉर जस्टिफिकेशन ले लेते हैं। जी तो ठीक है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन का 1 मार्क हो गया, जस्टिफिकेशन का 1 मार्क हो गया। तो जी इस ठीक तरह है। से ये आपकी मार्किंग स्कीम बन जाए। ठीक है। ठीक है सर। Right. Anybody has any comments, questions? Right. So I think you can use this. You can use this question. ये आप कौन से लेवल पे इसको कौन से स्टूडेंट्स के लिए आप समझते हैं कि ये मुनासिब होगा? सर हमने इसको अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर के जो हमारा फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम होता है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। Right. जी Right. Yeah. Good. जी Okay. Thank you थैंक यू very सर। much. That was good. That was very good. थैंक यू सर। Okay. Now room 2, please. मारिया, हमारा आना है अभी, ये रूम 2 वाला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, ये रूम 2 है। Yes, sir. I think I'm from room 2. Oh, okay. Sir, I'm Major Madia, nursing instructor in College of Nursing. Right. Sir, we have decided a topic about dengue fever. Okay. हमने स्टूडेंट्स को डेंगू फीवर के ऊपर जो है ना वो पूरा लेक्चर दिया है। अब हम उनका नॉलेज असेस करना चाहते हैं और एनालाइज करना चाहते हैं। सही है। और हमने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाया सर। ये जी। एससीक्यू होगा सर, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। इसमें है Right. 35 years old female presented with a history of fever from last 2 days, headache, body aches, nausea, and ration body. Her CBC findings shows the following: is the TLC count is 2.4 and HP is 13 milligrams per deciliter and platelet count is 96,000. Right. Other findings are normal, like CRP is less than 6, LFTs and RFTs are normal.
These are the basic investigations we have done. Okay. Now our SCQs will be the question 1 will be the state the most likely diagnosis of Right. 1 mark. The second would be the name another test you would like to do Right. for the confirmation of your diagnosis. Okay. 3 is the describe the significance of lower platelet count on CBC. Right. And question 4 would be the what would be the precautions you would take for your patient. 6 Right. Okay. Because we have taught our students the dengue fever के ऊपर हमने लेक्चर दिया हुआ है और उसका हम फिर नॉलेज असेस करना चाहते हैं. राइट. इसके आपने मॉडल आंसर लिखे हैं? यस सर. जी. सर मॉडल आंसर में जो है वो डायग्नोसिस उसकी डेंगू फीवर और नेम जो अदर टेस्ट है जो बिल्कुल कंफर्म करेगी डायग्नोसिस को वो जो है डेंगू सीरोलॉजी NS1 और सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर प्लेटलेट काउंट जो है इसमें लोअर प्लेटलेट काउंट के साथ साथ TLC काउंट्स भी इसमें लोअर होते हैं पेशेंट्स के. के बारे में बताएगा और प्रिकॉशंस जो है ना वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज करने हैं. हमने पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है और जो है वो मॉस्किटो नेट्स यूज करने हैं. ये रिपेलेंट्स भी यूज कर सकते हैं. मॉस्किटो रिपेलेंट्स. आप शुरू में जाइए. इसके शुरू ये खत्म हो गया. इसके बाद भी है कुछ? नहीं सर बस या शुरू में जाइए. देखिए या सिनेरियो से या 35-year-old female presented with history of fever. थोड़ा नीचे कीजिए. नीचे करो. History of fever for from last 2 days along with headache, body aches, nausea and rash on the body. Her CBC findings show this. Right. So obviously हम इनके साथ units लिखेंगे. So right. और उसके बाद आप जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन देखिए. State the most likely diagnosis. Right. तो इसमें आपने कहा कि डेंगू है, लेकिन फर्ज करें स्टूडेंट लिखता है कि जी ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. यस सर. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो जाएगा. हाँ, जो है क्योंकि इसमें जो आप ठीक है आप कह सकती हैं कि मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो है, लेकिन आपको अल्टरनेट जो जहन में रखने चाहिए. जिस तरह फर्ज करें इसमें बायोसाइटोपिनिया हो सकता है ना इसमें. बायोसाइटोपिनिया और दूसरा ये कि टोटल वाइट भी लो है तो वो कोई कहे कि जी एप्लास्टिक अनीमिया है या बोन मैरो सप्रेशन है या. तो अगर आपने जो बेहतर होता है कि पहले हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ लें और फिर लाइकली डायग्नोसिस पूछ लें. जी ठीक है सर. अच्छा अभी आप अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो द अनदर टेस्ट यू वुड लाइक टू डू. इसमें आपको आप ये बताना होगा कि वो टेस्ट आप किस लिए करना चाह रहे हैं. सर कंफर्मेशन के लिए ना. हाँ जी. हाँ क्वेश्चन में नहीं है ना मैडम. क्वेश्चन में नहीं है ना. यस सर. हाँ जी. So name another test you would like to do to confirm your diagnosis. To confirm your diagnosis. जी सर. Right. हाँ जी. अब इसमें जो मसला होगा इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वेश्चन. इसमें मसला ये होगा कि फर्ज करें अगर स्टूडेंट जो है पहले सवाल के जवाब में डेंगू नहीं लिखता. हाँ जी सर. वही पहले से ही अगर पहला वो ठीक पिक करेगा तो अगले का आंसर उसके ठीक होंगे. वरना सारे हाँ तो ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है एंड वी ट्राई टू अवॉइड दैट. जी सर. राइट. तो अगर आप ये लिखें तो नेम अनदर टेस्ट यू वुड लाइक टू डू टू कंफर्म योर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. जी. अब इसमें सिचुएशन ये होगी कि फर्ज करें उसने पहला डायग्नोसिस गलत बताया है. जी. लेकिन जो टेस्ट बता रहा है वो उस डायग्नोसिस के हिसाब से सही है. सही है. ठीक है. फर्ज करें वो पहले में वो लिखता है जी कि मेरा डायग्नोसिस मलेरिया है. हाँ जी. वो तो गलत हो गया.
जी लेकिन दूसरे में वो लिखता है कि इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए मैं ब्लड फिल्म करूंगा, हाँ जी तो उसके डायग्नोसिस के हिसाब से वो आंसर सही है, सही क्योंकि उसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो मलेरिया है और वो मलेरिया के लिए वो सही जवाब दे रहा है। तो जी इसमें हमें कोशिश करनी होगी कि किसी तरह इस चीज को अवॉइड करें। अवॉइड कर जी ठीक है सर। हाँ जी अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर प्लेटलेट काउंट ऑन सीबीसी। अब इसका आपका मॉडल आंसर क्या है? सिग्निफिकेंस इसके डायग्नोसिस के लिए है, सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट के लिए है, सिग्निफिकेंस प्रोग्नोसिस के लिए है, ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है सर। सिग्निफिकेंस ऑफ लो प्लेटलेट काउंट जी इन सर, इंग्लिश इसमें हमें केयर जो है वो प्लेटलेट काउंट्स की करनी होती है ना, कि ये डे बाय डे ड्रॉप होते हैं। नहीं मैडम, वो सही है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जी कि सिग्निफिकेंस ऑफ लोअर प्लेटलेट काउंट हाँ जी किस लिहाज से, प्रोग्नोसिस के लिहाज से, प्रोग्नोसिस सिवियरिटी ऑफ इलनेस के लिहाज से, या मैनेजमेंट के लिहाज से? जी हाँ, ठीक क्योंकि ये जो जब आप कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लो प्लेटलेट काउंट, तो जी जी ये मतलब स्टूडेंट को क्लियर नहीं है कि आप किस लिहाज से सिग्निफिकेंस पूछना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं समझता हूं कि लोअर प्लेटलेट काउंट जो है वो डेंगू की सिवियरिटी को इंडिकेट करता है। जी बिल्कुल सर। हाँ जी एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कहता है कि जी ये बेसिकली ये पुअर प्रोग्नोसिस के लिए है। अच्छा तीसरा स्टूडेंट समझता है कि ये प्लेटलेट काउंट लो है, तो पता नहीं शायद हमें इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़े या प्लेटलेट देना पड़े। जी सो क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर कि आप ये किस पर्पस के लिए ये कह रहे हैं। जी ठीक है सर। ठीक है सिमिलरली जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड द प्रिकॉशंस यू वुड टेक फॉर योर पेशेंट, अगेन इज इट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, किस जी लिए? या आप कहते हैं कि आप जिस तरह आपने जवाब दिया कि आप जो है एक्चुअली प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं कि दूसरे पेशेंट्स को ना लग जाए। हाँ जी बिल्कुल हाँ, तो फिर क्वेश्चन जो है वो उस हिसाब से क्लियर होना चाहिए। व्हाट आर स्टेट द प्रिकॉशंस यू वुड टेक टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज टू अदर पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल। जी ठीक है सर। जो आइडिया है बहुत अच्छा है, जी सर। फ्लो बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्रिस्प करना होगा। जी ठीक है सर। हाँ जी और अच्छा, अब जो है अगर आप इसकी मार्किंग जिस तरह जो है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस का एक बात ठीक है, नेम एंड अदर टेस्ट, जबकि आप एक टेस्ट पूछ रहे हैं, एक मार्क ठीक है। आप सर मैंने एक बात पूछनी है, सॉरी सर। जी जैसे ये लिखा है स्टेट द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, जब हम स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं क्वेश्चन तो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, दो आंसर लिख देते हैं। अब जैसे इसमें मलेरिया और डेंगू दोनों लिख देंगे, तो एक गलत है और एक सही है। लेकिन अगर उसने सही लिखा हुआ है और तो उसको उसका मार्क मिलेगा, बेशक उसने दूसरा नहीं गलत लिखा है। नहीं, जो आप जो पहला आंसर है वो एक्सेप्ट होगा, ओ ठीक है ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि आप एक पूछ रहे हैं ना, तो जो वो पहले लिखेगा वो एक्सेप्ट जी होगा, दूसरे को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करते हैं ना, हम जैसे पूछते हैं मोड ऑफ डिलीवरी तो वो लिख देते हैं विजाइनल और सिजेरियन, तो फिर वो तो नहीं, वो ठीक है, पहला एक्सेप्ट होगा। स्टूडेंट क्लेवर होने की कोशिश करते हैं ना, तो जी उसमें जो पहला आंसर है वो अगर आपने एक पूछा है तो वो पहला होगा, अगर आपने दो पूछे हैं तो पहले दो होंगे। जी समझ गई, थैंक यू सर। डिस्क्राइब अनदर टेस्ट यू वुड डू, ठीक है, एक मार्क हो गया। अब सिग्निफिकेंस जो है, इस पे पर्पस के हिसाब से आप मार्क्स देंगे, राइट, एक या दो जो भी हैं। और इसी तरह आप ये लिख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, लेट्स से लिस्ट 3 precautions or 4 precautions you would take to prevent the spread of this disease in the community, for example, or in the ward. ठीक है सर। अगर हम थ्री पूछेंगे तो फिर उसके मार्क्स फिर हम हाँ, एक या दो जैसे भी आप करना, लेकिन आप ये जरूर जहन में रखें कि आप ये जो क्वेश्चन है ये स्टूडेंट को कोई हिंट ना दे। अगर आप ये कहते हैं कि तो स्प्रेड इन द कम्युनिटी और स्प्रेड इन द वार्ड, तो ये स्टूडेंट्स को एक हिंट दे देता है कि ये क्या कंडीशन हो सकती है।
सर ठीक है। हाँ, वो हिंट नहीं मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। जी ठीक है सर। Right. Thank you very much. I think Thank you very so well done. Very well done. Idea is very good. Just question थोड़े crisp करना है. Yes sir, ठीक. Thank you so much. Right. Okay. Can we move on to room 1, please? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर हमारा ग्रुप 2 शो हो रहा था तो जी वो जी. इसलिए मैंने फिर पहले रुक गया था, तो स्टार्ट करें सर। ओके सर, हमने फोरेंसिक मेडिसिन मेरा सही. जो जी स्पेशलिटी है उससे मैंने बनाने की कोशिश की है। जी. तो इसमें हमने टॉपिक जो रखा है वो एस्फिक्सिया का रखा है और जी जी. सब टॉपिक जो रखा है वो हमने इसके अंदर ड्राउनिंग का रखा है। Right. ये बेसिक इसका एलो है, उस पे ये एक छोटा एससीक्यू सा बनाया। जी जी. Next 19 ईयर next. ओल्ड Next page. Sir, we are unable to hear. डॉक्टर अभी वो सलमान शुरू का नहीं. नेट ब्रेक हाँ हुआ है। हाँ, कोई नेट का प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम. जी सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी. गुड गुड. थैंक यू. Next page. Okay, 19-year-old boy was recovered dead from Lahore Canal. On examination, there is fine flows at the mouth, hands clenched. Right, the most likely diagnosis of the body. Describe as autopsy surgeon the criteria to confirm whether it is antemortem or postmortem phenomena in the above body. इसको हमने 3 मार्क्स का रखा है, ऊपर पार्ट ए जो उसको हमने 2 मार्क्स का रखा है सर। Right. इसमें और की में हमने सर इसमें जी सर जी जी. ई में सर हमने फिर पार्ट ए में एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग जी इसका आंसर है जी. और पार्ट बी जो है जिस तरह ये इसमें ऑटोप्सी सर्जन कैसे कंफर्म करेगा वेदर एंटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम, उसके हमने फीचर लिख दिए कि जी ऊपर जो गया जो उसमें सिनेरियो में जी. स्टेम के अंदर फाइन फ्लोथ है कि डेब्रिक स्पैज्म और हाथ जो है क्लेंस शो होंगे जो यूनिसेलुलर एलजी है जो ब्लड में मिलते हैं। अगर पर्सन इनहेल करेगा सोचेगा कि डायटम्स टेस्ट जो है वो कब पॉजिटिव आता है। तो अगर इसमें हमने ये डिफरेंशिएट कराना है कि हमने कि इट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग और समवन
has thrown him after killing into the what homicide or suicide को या राइट accident को राइट क्लियर करने के लिए। तो ये उसमें हमने फीचर पीरियड डाले हैं कि डायटम्स देखेंगे जो जी शोरस साइन है और लंग्स ये था सर इसमें। राइट ओके आपने कोई मार्किंग स्कीम बनाई है? मार्किंग Right. Yeah, okay. Now, तो नहीं बनाई सर ये हाँ देखते हैं इसके 19-year-old boy was recovered dead from Lahore Canal. On examination, there is fine मैंने जैसे for ब्रैकेट में लिखा हुआ है mouth, hands मार्क्स का ए पार्ट planes, है और 3 मार्क्स and weeds in it. Face cyanosed and rigor बी पार्ट। developed. So, write the most likely diagnosis. Describe as autopsy surgeon the criteria to confirm whether it is antemortem or post-mortem phenomena in the above dead body, right? Yes. Yeah, I think scenario is clear enough. So students को एक पूरी पिक्चर मिल जाती है और फिर ये कि आपके ख्याल में कोई और डायग्नोसिस लिख सकते हैं? कोई और डायग्नोसिस लिख सकते हैं इसमें? इसमें अगर तो ये बच्चा पढ़ रहा है देरी से जाएगा जी उस लेवल के बच्चे के लेवल पे तो इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। सही राइट ओके एंड डिस्क्राइब अब ये जिस तरह आपने सेकंड क्वेश्चन में 3 मार्क्स लिखे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी फाइंडिंग्स होंगी? जी सर। आपके ख्याल में जो कितनी फाइंडिंग्स आप एक्सपेक्ट करते हैं टू सी? Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Yeah. अगर आप उसमें नंबर ऑफ फाइंडिंग्स लिख दें, अगर ये लिखें कि द लिस्ट 3 और 4 या जितनी भी फाइंडिंग्स हैं which are expected to be seen, तो उससे आपकी मार्किंग इजी हो जाएगी इसमें। सर डॉक्टर सलमान कह रहे हैं कि उनका नेट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है इसलिए वो बार बार ब्रेक हो रहा है। मुझे आइडिया है। अच्छा डॉक्टर सलमान कैन यू हेयर मी? जी सर। इसमें सर वो बच्चे जो हैं मैं ये कह रहा था कि जो 3 पॉइंट तो बच्चे लिखेंगे ना जी, जो आपका जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप ये लिख दें फाइंडिंग्स का नंबर लिख दें, दिस 3 फाइंडिंग्स 4 फाइंडिंग्स और 5 फाइंडिंग्स, उससे आपका जो मार्किंग स्कीम है वो बेहतर हो जाएगी। जी सर वो भी कर सकते हैं या एनलिस्ट अगर करते हैं सर एनलिस्ट भी कर सकते हैं। हाँ एनलिस्ट द फाइंडिंग्स हाँ अगर उसमें ये बेहतर होगा कि आप उसमें नंबर बता दें कि एनलिस्ट 3 फाइंडिंग्स और 4 या 5 जितनी भी हैं, ताकि स्टूडेंट को पता हो कि वो आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर और उसी हिसाब से आप उसको मार्क्स दे सकते हैं। राइट Okay, I think we should move now to just complete this session. सर मेरा एक क्वेश्चन एक्सक्यूज मी। जी जी सर ये आज हमें पता चला इस एक्सरसाइज से कि हमें मतलब क्रिस्प क्वेश्चंस बनाने चाहिए और ये जैसे आप कह रहे हैं कि हम बताएं कि हम मतलब 3 उसके पॉइंट्स जानना चाह रहे हैं 2 जानना चाह रहे हैं उसी तरह नंबर हो। सर अब हम देख जब बना देते हैं और कोई स्टूडेंट 5 लिख रहा है, कोई 10 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है और टीचर से जब वो एक स्टूडेंट क्लेम करता है कि भी अब आपने आगे 2 नंबर लिखे हुए थे तो मैंने 2 बातें लिख दी हैं, तो उसे अभी रिसेंटली सर ये कहा गया अभी हमारे एक फैकल्टी ने कि ये एफएससी वाली बातें ना सोचें कि इन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे तो हम इन्हें 3 नंबर लिखते हैं 3 नंबर दे देंगे। साइड इफेक्ट्स पूछे गए थे किसी मेडिसिन के तो बच्चे ने 3 लिखे थे क्योंकि 3 नंबर उसे लिखे नजर आए थे। सॉरी सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मैंने नेट चेंज किया है जरा देखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर हम कर सकते हैं इसमें।
कि नंबरिंग हम कर सकते हैं कि क्राइटेरिया जो देखिए उसकी ना, आप नंबरिंग कर दें जिस तरह स्टूडेंट के लिए। मैडम जिस तरह आप कह रही हैं, लेट्स से जो है क्वेश्चन है और एक स्टूडेंट जो है 3 लिखता है, दूसरा 5 लिखता है, तीसरा 10 लिखता है और सब सही लिख रहे हैं, तो आप मार्क्स कैसे देंगे? जी सर। तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना मार्क्स। तो इसीलिए ये जो मतलब इसमें स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि राइट ए पैराग्राफ, तो स्टूडेंट को पता है कि आप एक पैराग्राफ की बात हो रही है, या आप कहते हैं कि जी जो है एक जो लॉन्ग ऐसे लिखें, तो मकसद ये ये वर्ड है बता कि इतने मकसद वर्ड ये है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो उस हिसाब से जवाब दे सके। ठीक है सर। राइट, थैंक यू सर, वेरी और मच। स्टूडेंट जो जवाब देता है उसके मुताबिक फिर मार्किंग भी अप टू द मार्क होनी चाहिए ना, कि ये हाँ, नहीं है कि अगर जिसने ज्यादा लिख दिया तो उसको आप ज्यादा नंबर दे दें, और जिसने नहीं आपका क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया ना बच्चे ने, अगर 3 आपसे पूछे थे 3 उसने बता दिए, तो आप उसको फुल मार्क्स देंगे 3? हाँ, इसलिए हाँ इसलिए जी, कि फिर तो देंगे। उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसको तो आपने बताया ही नहीं कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। जी सर, और फिर उससे कह दिया कि बच्चे एफएससी वाले लेवल पर ही हैं, आज तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने 3 साइड फैक्ट्स लिखे हैं तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, वो ज्यादा सारे लिखे। अब ज्यादा की सर कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं ये नहीं, सर अभी रिसेंट कल हुआ है। ज्यादा सारा की क्या डेफिनेशन है? वही मैं कह रही हूँ कि सर उसकी हमारी डेफिनेशन भी नहीं है, नहीं, हाँ, हम अपनी नहीं रूल में भी नहीं, कहीं ये जो है आप क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए, वरना अगर आप देखें तो स्टूडेंट कैन सू यू इन द कोर्ट। जी सर, वो पाकिस्तान में नहीं ना ऐसा होता। नहीं नहीं, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि वो करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जब क्लियर नहीं है, तो अगर कोई 2 लिखता है या 10 लिखता है, जबकि आपके मैक्सिमम मार्क उसमें जो है बताए हुए हैं, तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? तो जी, ये हाँ, यानी कि ये सर जो आपने स्ट्रक्चर्ड मार्किंग बना दी है, आप उसके मुताबिक तो नंबर देंगे ना हर स्टूडेंट को। अब आप स्टूडेंट टू स्टूडेंट कंपेयर तो नहीं करेंगे कि एक ने ज्यादा लिखे हैं तो उसको हम नहीं पूरे नहीं मार्क्स दें, एक ने कम लिखे हैं तो उसको कम मार्क्स दे दें। नहीं मैडम, आप बिल्कुल स्टूडेंट्स को बिल्कुल कंपेयर नहीं करेंगे, आप अपने आंसर से कंपेयर करेंगे। यस सर, यानी कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इतना मुझे आंसर चाहिए, अगर स्टूडेंट ने प्रोवाइड कर दिया आपको उतना आंसर, तो आपको फुल मार्क्स देने चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सलमान साहब, आप जरा ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करें, तो देन विल मूव फॉरवर्ड। जी सर अक्सर बच्चे होते हैं, जिस तरह अगर ये फर्ज करें एक हमने पार्ट बी अगर रख दिया है 3 मार्क्स का, कि व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ राइगर मोर्टिस, तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ राइगर मोर्टिस जो है उसमें वो वही एटीपी एडीपी और मसल इंटीग्रेशन होती है फाइबर्स की। कुछ बच्चे एक लाइन में लिख देते हैं, कुछ बच्चे उसको एक्सप्लेन डायग्राम के साथ कर देते हैं। नंबर 3 ही है। तो अगर वो उसने एक लाइन में आंसर लिख दिया वो भी ठीक है, जिसने वो लिख दिया है वो फ्लो चार्ट डायग्राम के एटीपी है, फिर एडी में एटीपी में जाता है, फिर फाइबर्स आपस में इंटरलिंक करते हैं, वो डेथ के बाद वो नहीं इंटरलिंक होंगे तो फंस जाएंगे आपस में। तो उसमें आंसर उसका भी ठीक है, आंसर उसका भी ठीक है, फिर इसमें हम कैसे डिवीजन करेंगे? की पे डिपेंड करता है ना डॉक्टर सलमान, की बहुत अच्छी हो, जो की है वो। हाँ जी, अगर डॉक्टर नहीं की सलमान पे तो आप हमने उसमें फुल लिखा हुआ है ना ये फ्लो चार्ट के साथ। अगर एक बंदे ने एक लाइन में फिर भी आंसर सही लिख दिया हाँ, बिल्कुल उसी का। हाँ, अगर आपके जो कीज हैं वो पूरी हैं, या दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हैं ना कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट डायग्राम बनाए, अगर आपने ये नहीं लिखा तो फिर आप डायग्राम के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है, जब तक आप वो उसमें लिखेंगे नहीं। सर जब हम लोग मैट्रिक वगैरह में जो हम ऐसे लिखा करते थे, उसमें ये होता था ना, मतलब कोई की तो होती नहीं थी, जो जितना ज्यादा लिखता था उसको उतने मार्क्स मिलते होते थे। वो मैडम, उसमें हम आंसर जो है ना बालिश से नापते थे। हाँ जी बिल्कुल, कि जिसने 1 पेज लिखा और किसी ने 5 पेज लिखे हैं, तो जी सर बिल्कुल, हाँ, नाप नाप के मिलते थे नंबर। right, so let's move to the last part of this session. Okay.
राइट, सो ये तो हमारे हो गए। अब एक वेरी क्विकली वाइवा के बारे में, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज व्हाट इज वाइवा. These examinations allow the assessment of recall, depth of knowledge, hypothetical problem solving, judgment, clinical reasoning, and analytic skills. तो इसमें जो टिपिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड वाइवा है तो फिर मार्किंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो स्ट्रक्चर्ड वाइवा का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चंस पहले से डिसाइड कर लिए हैं और आप हर स्टूडेंट से वही क्वेश्चन पूछेंगे और वही मार्किंग स्कीम जो है यूज करेंगे. तो आपके जो रिलायबिलिटी है, जो वैलिडिटी है और जो जस्टिस इन मार्किंग, वो अनस्ट्रक्चर्ड वाइवा में नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता कि हर स्टूडेंट से एक डिफरेंट सवाल पूछे. सो यू हैव टू यूज द सेम क्वेश्चन और वही जो उसी की एक मार्किंग स्कीम जो है वो आप यूज करें. मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. लेट्स से द यहाँ अभी हम डेंगी की बात कर रहे थे तो ये क्वेश्चन भी डेंगी पर है. राइट, अब आप ये देखें कि ये टिपिकल एक मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम वाइवा में भी यूज कर सकते हैं. हमने यहाँ एक सिनारियो दे दिया. A previously healthy 5-year-old boy is admitted with history of fever for 3 days, complains of severe body aches and headache. There is no history of vomiting, cough, or running nose. Examination: he is febrile with this temperature. Few petechial rashes are spotted on his both lower limbs. He is conscious and well hydrated. With respiratory ये findings होंगे. On examination, his liver is palpable 3 centimeter below the right costal margin. Lungs are clear. तो ये आपने एक सिनारियो दे दिया और क्वेश्चन उस पे ये है कि 3 additional questions you would like to ask MA's mother to help you arrive at a diagnosis and give one reason for asking each question. तो अब ये आप इससे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि वो 3 और क्वेश्चन बताए और हर क्वेश्चन की एक रीजन दे. आप क्वेश्चन का 1 मार्क दे रहे हैं और रीजन का 1 मार्क दे रहे हैं और टोटल इस क्वेश्चन के आप 6 मार्क्स दे रहे हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है, लिस्ट 3 एडिशनल फिजिकल साइंस यू वुड लुक फॉर. सो बेसिकली ये एक MEQ है या मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको एक वाइवा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट के से आप यही क्वेश्चन पूछें. इसको फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हैं जो है इन्वेस्टिगेशंस में और रिजल्ट्स दे सकते हैं, एनालिसिस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं और ये मार्किंग स्कीम. तो बेसिकली कहने का मेरा मकसद ये है कि जो वाइवा है उसको स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. उसके क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम पहले से डिसाइड होनी चाहिए और जो है हर स्टूडेंट से वही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने चाहिए, सो दैट आपकी मार्किंग जो है वो जस्टिफाई हो सके. राइट, सो ये था वाइवा. चाहे आप दूसरे क्वेश्चन बना लें और चाहे आप एक मॉडिफाइड ऐसे क्वेश्चन यूज कर लें इस पर्पस के लिए. सर कितने क्वेश्चन एक वक्त में एक स्टूडेंट से वाइवा में पूछे जा सकते हैं? ये मैडम ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है. तो अब जो हमारा फर्ज करें वाइवा होता है तो हर एग्जामिनर को 10 मिनट देते हैं फॉर एग्जांपल, और उससे पहले हम एग्जामिनर्स आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि वो एक ही टॉपिक तो नहीं पूछ रहे. यूजुअली जैसे मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के टॉपिक एक हो सकते हैं, वो पहले से आपस में कंसल्ट कर लेंगे कि वो एक ही टॉपिक नहीं पूछ रहे हैं. लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड वाइवा होगा, उसकी मार्किंग स्कीम होगी. इस तरह से ये जो है सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. राइट, सर वो क्वेश्चन सर आप कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चन उन्हीं सब स्टूडेंट से होंगे, तो वो तो सर
तो पहले एक दो को तो चलो नहीं पता होंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स को पता चलेगा ये क्वेश्चन हो रहा है। नहीं, ये आप ये वावा डिफरेंट डेज पे करते हैं? नहीं सर, एक ही हाँ तो सेम फिर डे तो होता है सर। हाँ तो हम मैडम वो स्टूडेंट्स को हम क्वारंटीन करते हैं ना। सर बिल्कुल सर मोबाइल के quarantine दौर करते हैं, में जिसने दे दिया है वाइवा, वो जो है ना, जिन्होंने नहीं दिया उनके साथ ना मिले जाके, उनका डिफरेंट जो है ना वो नो, उनको हम करेंगे। डिफरेंट रूम्स में बिठाते हैं और उनके पास फोन उनसे ले लेते हैं। जी सर ठीक है। हाँ, तो वो क्वारंटीन में होते हैं और जब वो क्वारंटीन में होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत खाने पीने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। जी सर राइट, ठीक। राइट, ओके। नाउ ये राइट, इसके बाद जो है ये अभी तक हम बात कर रहे थे थ्योरेटिकल नॉलेज की, थ्योरेटिकल असेसमेंट की, रिटन एग्जामिनेशन या वाइवा। इसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन का है। तो आर यू पीपल फेमिलियर विद मिनी CX? जी सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। राइट, बेसिकली मिनी CX जो है ये यूजली वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट है, जिस तरह आप वार्ड में कर रहे हैं या क्लिनिक में कर रहे हैं। और फिर जो है स्टूडेंट को आप जो क्वेश्चन देते हैं वो बहुत क्लियर होता है। जैसे फर्ज करें आपने उसको या तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बता दें कि ये पेशेंट जो है ये चेस्ट पेन से आया है, तो इससे आप हिस्ट्री लें, ये एक हो सकता है। या ये है कि ये पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करें। तो ये अगेन इट्स वेरी स्पेसिफिक, वेरी फोकस्ड। और ये सिम्टम के अलावा ये इवन आप डायग्नोसिस दे सकते हैं कि ये पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ है, तो इसको एग्जामिन करें। अब इसमें आप स्टूडेंट को ये नहीं बता रहे कि क्या एग्जामिन करें हाइपरटेंशन। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है तो वो दे वुड लुक फॉर एनी साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एक्सेट्रा। और जब स्टूडेंट ये कर लेता है तो उसको फिर अपनी फाइंडिंग्स बतानी पड़ती हैं और उनको स्कोर किया जाता है। तो ये समझ लें इन अ वे जो हम ट्रेडिशनल शॉर्ट केस करते हैं उसकी एक स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन है। और ये आप इसको एज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जो इसमें हम उनके इंटरव्यूइंग स्किल्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म, क्लिनिकल जजमेंट, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और इसके हिसाब से उनका एक मार्किंग स्कीम बनाई जाती है, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक फॉर्म यूज होता है। ये कि अब जिस तरह ये है कि ऊपर तो उसका बायोडाटा दिया हुआ है, उसके बाद मेडिकल इंटरव्यूइंग स्किल्स। तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है या सुपीरियर है, फिजिकल एग्जामिनेशन स्किल्स हैं, ह्यूमनिस्टिक क्वेश्चन है। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आप इसमें ये है कि ये नॉट ऑब्जर्व मींस इस केस में हम इंटरव्यूइंग स्किल्स नहीं जो है असेस कर रहे, इसमें हम खाली फिजिकल एग्जामिनेशन जो है असेस कर रहे हैं। या हम इसमें सिर्फ क्लिनिकल जजमेंट, या सिंपली आप कहते हैं कि ये खातून है और इसके बच्चे को डायग्नोज हुआ है थैलासीमिया, तो आप कैसे काउंसलिंग करेंगे। तो ये बड़ा फोकस्ड मिनी सॉर्ट ऑफ क्लिनिकल इवैल्यूएशन होती है। और अगेन इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, उसकी मार्किंग स्कीम होती है और उस पे ही फोकस किया जाता है। जब स्टूडेंट ये चीज कर लेता है तो उसके बाद ही हैज टू समराइज द फाइंडिंग एंड प्रेजेंट
और यूजुअली क्वेश्चन ये होता है कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। तो ये इस अगेन आप देखेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो स्ट्रक्चर है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। So, जिस तरह इसको ये जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन यूज कर रहा है, लेकिन वो इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज कर रहा है। मींस कि स्टूडेंट्स को उन पे फीडबैक दी जाती है ताकि वो इम्प्रूव कर सकें, और आप उसको चाहें तो उसको कंटिन्यूअस असेसमेंट में शामिल कर लें या सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट में रखें। तो ये मतलब ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, और ये इसके लिए कोई आपको अलग से अरेंजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ये डेली रूटीन की एक्टिविटी भी हो सकती है वार्ड में। लेट्स से आपके पास एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, 5, 6, 7 ग्रुप्स का, उनको आप टास्क दे दें और उसके बाद 1 by 1 जो है सब प्रेजेंट करें, और आप उनके सामने डिस्कस कर सकते हैं और उनको फीडबैक दे सकते हैं। तो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ mini CX. Any comments or question on this? सर ये मिनी है तो कोई मतलब इससे बड़ा भी है, कोई और भी बात है, इसे मिनी जो नहीं, हम ये कह रहे हैं? बड़ा वो है जो हम लॉन्ग केस करते थे। ठीक से। हाँ, इसकी Short form Likert scale. हाँ, इसकी ड्यूरेशन 10 to 15 मिनट है। इसके मिनी ये इसलिए है कि ये बहुत फोकस्ड है। ये सर ये जो लाइकर्ट स्केल है ये स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी कि इसी तरह से इसको फॉलो करना होता है? नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूशन का अलग बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। जी ठीक है। हाँ, बेसिकली हर जो है इंस्टीट्यूशन या हर कंट्री की अपनी सिचुएशन होती है। आप फर्ज करें, अब हमारे पास ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छे हों ताकि मिनिमम इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े, तो आप उस पे एम्फसाइज कर सकते हैं। Any other question? Right. So next है No, sir. OSCE. Everybody is familiar with OSCE? जी सर, ऑस्की का पता है। Yes sir. सब करवा लोग भी रहे हैं स्टूडेंट्स को। Yes sir. OSCE और OSPE, we are running these sessions nowadays. Right, that's good. So basically जो मैं इसमें OSCE के अलावा जो चीज बताना चाह रहा था वो सॉरी वो इसकी वेरिएंट्स जो हैं OSCE के, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये है कि OSCE एक्चुअली अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म है, और उसको हम मुख्तलिफ तरीके से यूज कर सकते हैं। उस पे आप प्रोसीजर्स भी रख सकते हैं, उस पे आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी रख सकते हैं, उसमें आप काउंसलिंग स्किल्स भी रख सकते हैं। तो it is a platform which can be used for so many different purposes, और उसकी वजह से इसमें बहुत सी वेरिएशंस आ गई हैं। जिस तरह टोक्स है या टास्क ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स है, ये बेसिकली एक OSCE है, लेकिन उसको एक डिफरेंट नाम देके इसका जो बेसिस है वो वही है कि ये उसमें प्रोसीजर्स में, एक्सरेस में, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में एक्सेट्रा में यूज होता है, और इसमें इंटरेक्टिव और या ऑब्जर्व्ड और अनऑब्जर्व्ड पेशेंट्स होते हैं जिस तरह OSCE में होते हैं।
तो ये जो है ये हमारे जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स हैं, दे आर यूजिंग दिस फॉर देयर असेसमेंट। तो बेसिकली ये एक वेरिएशन है ऑस्की की। इसी तरह अगर आप और देखें तो डॉप्स जो है ये डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकल स्किल्स इज अनदर वेरिएशन ऑफ ऑस्की। बेस वही है ऑस्की का कि ऑस्की जो है एक प्लेटफॉर्म है, उसको मुख्तलिफ तरीके से यूज किया जा रहा है। उसी तरह स्टूडेंट्स रोटेट करते हैं, उसी तरह उनको असेस किया जाता है, हर एक की मार्किंग स्कीम है और उस हिसाब से उनको मॉनिटर किया जाता है। ये हैं डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं ऑस्की की विद डिफरेंट नेम्स विद स्लाइट मॉडिफिकेशन हियर एंड देयर। Right. Now, final is situational judgment tests. Are people familiar with this? Yes, sir. No, Right. sir. No, sir. No, sir. हम लोग इसमें आप as you see situational judgment, इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स की ये कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन करता है। We'll go into a bit detail here. Used to assess a candidate's decision-making and judgment skills. Candidate is presented with a work-like situation and a number of possible actions or responses they could take. The candidate must choose their most likely and least likely, दो चीजें choose करनी होती हैं उसके, तो उसका most likely response क्या होगा और least likely response क्या होगा। और obviously इनमें आंसर सब ठीक होते हैं, इसमें कोई आंसर गलत नहीं होता, लेकिन उस सिचुएशन के लिहाज से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो एक सिचुएशन बताई जाती है, उस सिचुएशन के डिफरेंट सॉल्यूशंस बताए जाते हैं और स्टूडेंट से कहा जाता है कि मोस्ट लाइकली और लीस्ट लाइकली जो है आपके इसमें क्या डिसीजन होगा। दे आर ऑल करेक्ट बट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन they may be different. मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप, you are attending a 2-year-old patient who presented to emergency department with complaints of vomiting and diarrhea for 2 days. The symptoms have reduced in frequency but are still present. You assess that child has acute gastroenteritis with mild to moderate dehydration, which can be treated with oral fluids. So ये एक clinical जो scenario है। अब उसमें situation क्या है? Parents inform you that they come from a rural area, which is quite far from the hospital. They could not come earlier as they had to wait for a bus to travel. Unfortunately, this bus does not come regularly. Their other 2 children are being taken care of by their neighbors. अब ऊपर का जो सिनारियो है उसका एक स्टैंडर्ड जो है ट्रीटमेंट है, लेकिन अब इस सिचुएशन में ये एक जो है कि पेरेंट्स जो है दे आर फार फ्रॉम द हॉस्पिटल, दे डू नॉट हैव अ ट्रांसपोर्ट और उन्होंने जल्दी से वापस हॉस्पिटल नहीं आ सकते। एट द सेम टाइम उनके 2 बच्चे हैं जिनका ख्याल रखना है और वो उनके नेबर्स के पास है। ये अब एक सिचुएशन क्रिएट होगी विच इज नॉट अनयूजुअल। तो अब सिचुएशन होगा ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड लीस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। नंबर 1, parents should be taught how to prepare and feed ORS and discharge home with adequate supply of ORS packages. ये एक solution है। Second, parents should be taught how to prepare and feed ORS and advised to come back for follow-up next day. ये दूसरी situation है। Third, patient should be admitted in the pediatric ward for further management.
Number 4, patient should be managed and observed in accident emergency department for 6 hours before taking any other step or decision. आप ये देखिए कि मेडिकल ऑफिसर इस सिचुएशन में है और उसको ये डिसीजन करना है. अगर आप उसको मेडिकली देखें तो वो एक माइल्ड डिहाइड्रेशन है जो सिंपली ORS देने से ठीक हो सकती है. लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जो पेरेंट्स जो हैं इस सिचुएशन में हैं कि आपने सोचना है कैन यू सेंड देम बैक, वुड इट बी सेफ. अगर कोई उनको और प्रॉब्लम हो गया तो उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो कैसे वापस आएंगे, क्या करेंगे. ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी नहीं चाहते कि पेशेंट को अननेसेसरीली वार्ड में एडमिट कर लें. तो इस सिचुएशन में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं और आप उससे कहते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट और लीस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगी. आपके ख्याल में मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें क्या होगी? सर 1 नंबर मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे तो. पेरेंट, हाँ, लेकिन इसमें मसला ये है मैडम कि पेरेंट्स शुड बी टॉट हाउ टू प्रिपेयर एंड फीड ORS एंड डिस्चार्ज होम विद एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ORS पैकेज. लेकिन अगर फर्ज करें उसका डायरिया और वोमिटिंग स्टॉप नहीं होती और उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है और उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो हॉस्पिटल से बहुत दूर है, तो that can be very dangerous situation. Yes. Fourth option is more appropriate. सर्च के लिए हम उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और फिर बाद में हम डिसीजन लेंगे उसकी अकॉर्डिंग टू द हर कंडीशन. So आप समझते हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन 4 है और लीस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? 1. सर 2 लीस्ट अप्रोप्रिएट है कि नेक्स्ट डे हम नहीं बुलवा सकते ना. 2 is least appropriate. नहीं, उससे ज्यादा तो बुरी पहली वाली है जिसमें आप बुला ही नहीं रहे. यस सर. 1 में तो आप बुला ही नहीं रहे. सो आपने देखा कि जो है एक सिचुएशन की वजह से जो अप्रोच है वो कितनी चेंज हो गई है. जी सर, इट्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें आप डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं. एब्सोल्युटली राइट. Yes. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट जो है कि इसमें मेडिकल के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको जहन में रख के स्टूडेंट कैसे डिसीजन लेता है. राइट. सो दिस इज द डिफरेंट वेज जो हैं सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट के. ये पेपर बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी है, वीडियो क्लिप्स भी हैं. आप एक वीडियो शेयर कर सकते हैं और स्टूडेंट से उसके बारे में पूछ सकते हैं या एनिमेशन को यूज कर सकते हैं. I think with that we complete this first session. Any questions or comments? Sir, thank you so much, sir. It's a well. Right. It was a very good and interactive. Right. अब जो दूसरा हिस्सा है इसका वो है उसपे जो blueprinting पे. So I think we should take a break. कितनी देर की ब्रेक ले सकते हैं हम, क्योंकि we are exactly following the time. So ये जो हमारा सेशन था मलेशिया के हिसाब से ये था 12 से 4 बजे तक. तो 1 hour ब्रेक लिखी हुई है. जी बात. तो इसका मतलब ये है कि हम 5 बजे दोबारा मिलेंगे. पाकिस्तानी टाइम में 2 बजे. जी हाँ, पाकिस्तान के 2 बजे, मलेशिया के 5 बजे. तो सर हमारा 2 नहीं, हम सही है. तो ये नमाज का टाइम भी मिल जाएगा और हाँ लंच का टाइम भी मिल जाएगा. सो वी विल मीट इंशाल्लाह इन 1 hour टाइम. जी ठीक है. थैंक राइट. थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir.